design. Whether you are designing for tech, fashion, real estate or hospitality, every industry has its own unique style, color psychology and branding language. So if you are ready to level up your skills, let's start designing smarter, not harder. Okay? So first of all, I want to discuss about the first step, which one is understand the industry. Understand the industry. Okay? So let's elaborate for you. So start with research, learn the company's target audience, competitors and trends in their industry. For example, tech, okay, like innovative, clean and futuristic. Okay, and next we have the food, like friendly, appetizing and warm. And last we have the luxury, like elegant, minimal and premium. Okay, so this step will guide all your design choices. Okay. Now, next we discuss the second step, which one is define the brand personality. Define the brand personality, okay? So let's elaborate for you. So think of the brand as a person. Is it playful or serious, modern or traditional? So write down the 3 to 5 adjectives that describe the brand's personality. This helps you to choose the right colors, fonts and shapes, okay? Now, let's see the next step, which one is choose the right style. Choose the right style, okay? So let's see this one. So every industry lends towards certain styles. So let's see the first one, which one is the tech and startup. Tech and startup, okay? अब इसमें क्या होता है, फ्लैट होता है, जेमेट्रिक होता है, मिनिमलिस्ट आइकन्स होते हैं, ओके? एंड नेक्स्ट वी हैव द फूड एंड बेवरेज, ठीक है? इसमें होता है कुछ हैंड ड्रॉन और इलस्ट्रेटिव स्टाइल्स होते हैं. नेक्स्ट वी हैव द फैशन एंड लग्जरी, लाइक एलिगेंट वर्ड मार्क्स विथ serif fonts. Okay, and last we have the sports, like bold, dynamic and strong shapes. So your style should match both the brand and the audience. Okay, is that clear? And the next step is that the color psychology by industry. Color psychology by the industry. Okay, so let's elaborate for you. So basically colors trigger emotions. For example, blue, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, ट्रस्ट को. ओके, सो यूज इन टेक एंड फाइनेंस लाइक पेपल एंड IBM, ठीक है. यदि आप पेपल यूज करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि किस टाइप का पेपर का लोगो होता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव द रेड, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी और एपेटाइट को. ओके, एंड यूज इन द फूड ब्रांड्स लाइक कोका-कोला एंड KFC. नेक्स्ट वी हैव द ब्लैक एंड गोल्ड, ठीक है, ये इंडिकेट करता है लग्जरी को, एंड यूज इन हाई एंड ब्रांड्स लाइक CUCCI and Rolex. Okay, so choose the 1-3 main colors that reflect the industry and brand personality. Okay, is that clear? Now let's see the next step, which one is the pick fonts that match. Pick fonts that match. Okay, so let's elaborate for you how did it work. So typography is powerful. Typography is powerful. Okay, so let's see the first example, like sans serif fonts. सेंस सेरिफ फॉन्ट्स, ओके, बेसिकली मॉडर्न और क्लीन होते हैं और टेक इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव द सेरिफ फॉन्ट्स, लाइक एलिगेंट एंड क्लासिक होते हैं और लग्जरी इंडस्ट्री में, ब्रांड में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव द स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, ओके, ये फ्रेंडली होते हैं, हैंड क्राफ्टेड होते हैं और फूड एंड बुटीक में आप इसका यूज़ कर सकते हैं. ओके, and make sure never pick a font just because it look cool. It should be fit the industry. Okay, is that clear? And next we have the sixth step, which one is the use symbols and shapes carefully. Use symbols and shapes carefully. Okay, so let's elaborate for you how did it work. Okay, so basically symbols should relate to the business but also be unique. Okay, so let's see the example. First one is that the health industry, ठीक है. अब यहाँ पे आपको किस टाइप के सिंबल दिखने के लिए मिलते हैं, लाइक क्रॉसेस एंड हार्ट्स एंड लीव्स. नेक्स्ट वी हैव द टेक इंडस्ट्री, ठीक है. अब टेक इंडस्ट्री में यदि आप देखेंगे तो आपके सामने जो लोगोस आएंगे, लाइक एब्स्ट्रैक्ट शेप्स उसमें आपको मिलेंगे, कुछ सर्किट्स मिलेंगे, ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव द रियल एस्टेट, ठीक है. अब इसमें क्या सिंबल हो जाते हैं, आपके बिल्डिंग्स के एंड रूफ टॉप्स के. ओके, and avoid the glitches by adding a fresh twist to familiar symbols. Okay, is that clear? So finally we discuss the last step, which one is to make it versatile. Okay, so let's elaborate for you how did it work. So here this one, your logo should work in different formats like app icons,
business cards, packaging or billboards. So always test it in black and white and at small sizes to ensure it stays clear and recognizable. Okay. Finally, we have the bonus tip for you, okay? And create the 2-3 style variations for your client to choose from. Sometimes they will like a mix of styles from different industries, okay? Is that clear? Yeah, that's it for today, and I hope you learned something new. So see you in the next one. Have a great day. Bye.